So friends, welcome back to the ज्ञान गंगा classes and आज हम लाए हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स की रिवीजन एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे ही और जो फन एंड एक्साइटिंग वीडियोस एंड लर्निंग लेसन्स लेकर के आते हैं वो आपको यूं ही नोटिफाई होते रहे। तो लेट अस सी व्हाट वी विल कवर। वी विल कवर द कीवर्ड्स, समरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द कीवर्ड्स। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था? यस, वी स्टार्ट विद द लस्टर। एंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? This is the property of material to shine. अगर वो material चमकता है तो we think that it is luster, तो फिर the property of material to shine is the luster property. Soluble, the materials that are dissolved in water. The materials that dissolve in water is soluble material. Insoluble, the materials that do not dissolve in water is insoluble. Materials that do not dissolve in water is insoluble. Miscible, liquids that mix with each other are miscible liquids. Immiscible liquids, the liquids that do not mix with each other. Clear friends? चलिए आगे और कुछ keywords है वो देखते हैं। Opaque, materials that do not allow light to pass through them are opaque materials. Transparent, materials that allow light to pass through them completely are the transparent materials, and the translucent ones are the materials that allow light to pass through them but partially. तो हमने ये तीन टाइप के मटेरियल्स भी पढ़े थे, रिवाइज हो गया। तो नाउ लेट अस सी सम समरी नोट्स। हम अपने चैप्टर को यहाँ समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। फर्स्ट वी लर्न्ड द ऑब्जेक्ट्स around us are made up of variety of materials. हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हर कोई अलग अलग चीजों से बना होता है। तो the given material could be used to make a larger number of objects. It is also possible that objects could made up of single material or different type of material. हमने पढ़ा था कि pen could be of plastic, it could be of metal, और आपका टेबल सिमिलर वे में अलग अलग चीजों का हो सकता है। कुछ याद आया फ्रेंड्स? तो हमको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट थिंग, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट। सम आर रफ, सम आर स्मूथ। हमने अपीयरेंस के बेस पे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या क्या थी? शाइनी यानी लस्टर, रफ और स्मूथ ये था टेक्सचर। फिर similarly some materials are hard and soft और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। Materials are soluble in water whereas some are insoluble. Soluble insoluble property पढ़ी थी। Some materials such as glass are transparent. Some such as wood and metals are opaque and some materials are translucent. आप translucent material का example दे सकते हो? Yes, it is butter paper, colored glass. आपको भी अगर ये वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या आप अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके आंसर्स आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ करके आपको उसके रिप्लाई भी दूंगी और कोई क्वेरी भी हो तो वो भी बिल्कुल पूछिए, हम आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस सेशंस। हियर फर्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है और वो मटेरियल जिससे वो बने होंगे, हमें इनको मैच करना है। तो फिर बुक इज मेड अप ऑफ, यहाँ किससे बनी है बुक? यस, बुक इज मेड फ्रॉम द पेपर। टम्बलर इज मेड अप ऑफ plastics, chair
wood, toy. Yes. Tumbler प्लास्टिक के बन सकते थे, but tumbler is made from the glass here because toys cannot be made up of glass. So toys will be added to the plastic and tumbler will be to the glass. Then shoes, leather. Let's see the next activity. The state true or false. So stone is transparent while glass is opaque. Is this statement true or false? Yes, it is false. A notebook has luster while eraser does not. Does notebook has luster? No. So false. Chalk dissolves in water. Does chalk dissolves in water? They do not dissolve. They are insoluble. A piece of wood floats on water. Again it is the false. Sugar does not dissolve in water. It's again false because sugar is soluble material. It dissolves in water. And then oil mixes with water. No, they are immiscible liquids, so they do not mix with each other. Sand settles down in water. Does sand settle down in water? Yes, it is true. Vinegar dissolves in water. Does vinegar dissolve in water? Again it is true. So find the odd one out. हमें यहाँ पे set of चीजें मिली हैं, उनमें से देखना है कि कौन odd है. Here we have chair, bed, table, baby, cupboard. यहाँ पे आप materials देख रहे हो, जो substances, objects देख रहे हो, कौन से materials से बने हैं सब? These all are, इसमें से ये सारे chair, bed, table and cupboard are made from wood, while baby is not. So baby is odd one out. Then there is rose, jasmine, boat, marigold, lotus. यहाँ पे भी आप देखोगे rose, jasmine, marigold और lotus are the flowers, while boat is an object, so boat is the odd one out. Aluminium, iron, copper, silver, sand. Here aluminium is a metal, iron is a metal, copper is a metal, silver is a metal, and sand is the odd one out. Next is sugar, salt, sand, copper sulfate. यहाँ पे देखिए कि सुगर डिसॉल्युबल है, सॉल्ट भी डिसॉल्युबल है, सैंड इज नॉट सॉल्युबल, जबकि कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल है, तो इस वजह से सैंड इज द ऑड वन आउट. नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस. द शाइन ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड, yes, luster of the material. Which of these substances is miscible liquids? हमने पढ़ा था miscible liquids. इसमें से कौन सा substance miscible है? Yes, it is alcohol. Which of these is non-magnetic material? Cobalt, nickel, plastic or iron? Yes, it is plastic. Dash will allow electricity to pass through it. Water, does water allow electricity? Allow electricity यानी कि हम क्या पढ़े थे? Yes, it is a conductor. तो इसमें से कौन कंडक्टर नहीं है? That will not allow electricity to pass through it. It is B, plastic scale. Dash is transparent. Who are transparent? Mirror, wooden door, butter paper or clear glass? Yes, it is clear glass. Then the material that has a bigger density than water, higher density than water will it float on water, sink in water, float or sink depending on the shape of object, or float or sink depending on the volume of the object. Higher density than water 100% है कि वो sink करेगा water में. Which of the following substances does not dissolve in water? Salt, sugar, chalk or milk? Exactly.
chalk. So friends, हमने ये एक्सरसाइज भी कर ली. So let us see what is the next. It is fill the blanks. The materials that do not shine are called. हमने क्या पढ़ा था? Yes, it is non-lustrous material. The material that do not dissolve in given liquid are called insoluble material. A dash can float on surface of water. What can float on surface of water in given में से? It is feather. Dash is a substance that attracts iron, cobalt and nickel. Magnet attracts them. Substances that allow lights to pass through them partially are called translucent. And now we have to give an example of each of the following. We have materials that have shine. Example दीजिए. Yes, it can be any metal. You can write down. Here I am writing aluminium. Then the material that cannot be compressed. Rock. Any hard material that cannot be compressed can be the example here. Material that are soluble in water. Sugar. Material that are insulators of electricity. Wood. Material that do not allow light to pass through them. Wood. So answer the following. Name the 5 objects which can be made from wood. आपको यहाँ पे कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कि वुड से बने होंगे. तो I wrote down here table, chair, bat, bed, toothpicks. Then we have to select those objects from the given order of objects that shine. हमको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट. और इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन शाइन करते हैं. तो क्या ग्लास बाउल शाइन करता है? क्या प्लास्टिक टॉय शाइन करता है? और स्टील स्पून? और क्या कॉटन शर्ट शाइन करती है? तो आंसर इज द ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन आर ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Given below are the name of some object and materials. यहाँ हमने कुछ दिए हुए हैं. हमको क्या क्या करना है? 2 काम करना है. एक, group them as round shape and other shape, और दूसरा है eatables and non-eatables. तो हमें यहाँ क्या क्या मटेरियल मिला है? We have water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. So what we do? First thing, round and other shape. तो उसमें से राउंड कौन कौन से हैं? Yes, basketball राउंड है, orange, globe और earthen pitcher. ये सारे सब shapes, ये सारे objects जो हैं, ये round shape में होते हैं. And other shapes, the rest are in the other shapes. Same with the B will, we have to make eatables and non-eatables. तो eatables यहाँ कौन कौन से हैं? Water, orange, sugar and apple. वो हमारे इस ग्रुप में आ गए और बाकी रेस्ट हमारे नॉन ईटेबल्स में आ गए. सो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? आपको मजा आया हमारे साथ ये एक्सरसाइज करने में? और अगर आया है तो हमें जरूर लाइक कीजिएगा और हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी कुछ नया सीखे. एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.